Hello everyone, welcome to the online classes. In our previous video, we had already completed exercise 1.2. Now today we will start from rounding of the numbers. We follow certain rules in rounding of a number to the nearest 10, nearest 100, nearest 1000. Students, हम जो numbers को round off करते हैं वो हम nearest to 10, nearest 100 and nearest 1000. These rules are given below. There are certain rules we have to follow. Rounding of a number to the nearest 10. Examine the digit at one's place of the given number. First step. Now move to the second step. If the digit at one's place is less than 5, replace one's digit by 0 and keep the other digits as they are. Students, अगर 5 digit से number कोई छोटा है, इट मीन्स लेस देन 5, तो वहां पे हम उसको राउंड ऑफ की जगह क्या लिख देंगे? 0. फॉर एग्जाम्पल दिस इज 43, तो ये राउंड ऑफ होके किस में हो जाएगा स्टूडेंट्स? इट विल बी 40. वाई? बिकॉज ये 5 जो है 3 से लेस देन है, इट विल बी अ 40. नाउ थर्ड स्टेप. If one's digit is 5 or more, increase 10 digits by 1 and replace one's digit by 0. अब अगर ये बोल रहा है कि digit 5 से ज्यादा है, it will be round off. For example, this is 46, तो ये क्या बन जाएगा students? round off होके it will 70. Why? ये 5 से ज्यादा है. अगर 5 है तो 5 से अगर कम है तो वो कम नंबर में राउंड ऑफ हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल दिस इज 34, ये राउंड ऑफ हो जाएगा नियरेस्ट टू दी 30. ओके स्टूडेंट्स. फॉर एग्जाम्पल दिस इज 37, तो ये राउंड ऑफ हो जाएगा स्टूडेंट्स, इट विल बी अ 40 बिकॉज 5 से ज्यादा है. ओके स्टूडेंट्स. नाउ मूव टू दी नेक्स्ट, दैट इज राउंडिंग ऑफ अ नंबर टू द नियरेस्ट 100. अभी हमने क्या डिस्कस किया था? राउंडिंग ऑफ द नंबर्स टू नियरेस्ट 10. नाउ वी विल डिस्कस राउंडिंग ऑफ अ नंबर टू द नियरेस्ट 100. एग्जामाइन द टेंथ डिजिट ऑफ द गिवन नंबर. फर्स्ट वी हैव टू एग्जामाइन द टेंथ डिजिट. नेक्स्ट, इफ द 10 डिजिट्स इज लेस देन 5, अगेन अगर जो 10th डिजिट है अगर वो लेस देन है किससे? 5 से, replace each ones of the 10th and one's digit by 0. तो हमें replace करना है किसको? 10th digit को और one's digit को by 0 से, and keep the other digits as they are. For example, that is 345. तो students, उसने क्या बोला? replace करना है किसको? ones और tens को. It will become 350. तो ये रिप्लेस हो गया. हमने किसको रिप्लेस किया? वंस, टेंस. और आप देख सकते हो वंस में 5 से ज्यादा है, तो ये राउंडिंग ऑफ होकर क्या बन जाएगा? इट विल बी 350. नाउ मूव टू दी थर्ड स्टेप. थर्ड स्टेप. इफ द 10th digit is 5 or more, increases number digit by 1 and replace 8 digit at 10th and once replaced by 0. अगर 5 से ज्यादा है, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, तो वो राउंड ऑफ हो जाएगा किसमें? 0 में, 10th और 1s की डिजिट. फॉर एग्जांपल यू कैन सी हियर दिस इज 478. अब मुझे इसको राउंड ऑफ करना है, ये 5 से ज्यादा है, इट विल बी 480. तो ये किसमें राउंड ऑफ हो जाएगा? तो क्या बोला? जो वंस प्लेस है वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा अगर 5 से ज्यादा है तो. अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड. नाउ मूव टू दी थर्ड वन, राउंडिंग ऑफ अ नंबर टू द नियरेस्ट 1000. अभी हमने क्या डिस्कस किया? राउंडिंग ऑफ द नंबर टू द नियरेस्ट 10, राउंडिंग ऑफ द नंबर टू नियरेस्ट 100. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द राउंडिंग ऑफ अ नंबर टू नियरेस्ट 1000. First step, examine the 100 digit of the given number. First we have to examine the 100th digit. Next, if the 100 digit is less than 5,
अगर जो 100 की प्लेस पे प्लेस वैल्यू है वो अगर 5 से कम है, replace each of the 100 digits, 10th digit and 1st digit by 0. Okay students, for example, that is 432. तो स्टूडेंट्स ये रिप्लेस हो जाएगा एंड इट विल बी 430. अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? नाउ मूव टू द थर्ड स्टेप. If the digit at 100 place is 5 or more, increase 1000 digit by 1 and replace each digit on its right by 0. अगर 100 की प्लेस पे 5 से ज्यादा है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 0. फॉर एग्जाम्पल 437, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 440. ये रिप्लेस कर दिया बाय 0. अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? नाउ मूव टू दी next part, that is the solved examples. Example number 1, rounding of the number 46,751. First we have to round off nearest to the 10, then nearest to the 100, then nearest to the 1000. You can see first we have to round off nearest to the 10, that is 57. तो 5 से ज्यादा है, it will be round off nearest to the 10th, that is 60. Then we have to convert into nearest to the 100, that is 757 is closer to 800. Why? ये 5 से ज्यादा है. Next, अब हमें किससे राउंड ऑफ करना है? नियरेस्ट टू दी 1000, that is 7000. 6757 को जब हम राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट टू दी 10,000, इट विल बी 7000. ओके स्टूडेंट्स, बाय, क्योंकि ये 5 से ज्यादा है. 1, 10, 100,000, तो आप 1000 की वैल्यू देख सकते हैं, वो 5 से ज्यादा है. इट विल बी कन्वर्ट इनटू 10,000. नाउ मूव टू दी एग्जांपल नंबर 2. राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 1000. Now again we have to round off the numbers nearest to the 1000. First one, that is 14,329. Again students, ones, tens, 100,000. जो 1000 की प्लेस वैल्यू है वो एज कंपेयर टू ज्यादा है. 44,729 is closer to 5,000. Okay. That is 4,329. Students, you can see 1, 10, 100,000. ये 5 से कम है. It will be closer to 4,000. Next, 4,729 is closer to 5,000. This is the second example. Now move to the third one. That is 15,000. That is 5,379 is closer to 5,000. Okay students, now move to the next example. Find the greatest and the least number which are rounded off to nearest 1000 as 4,000. Clearly all numbers from 4,001 to 4,499 are the round off to 4,000. जो भी स्टूडेंट्स नंबर होंगे 4001 से लेकर 4499, ये कहां तक राउंड ऑफ होंगे? इट विल राउंड ऑफ नियरेस्ट टू दी 4000. एंड ऑल्सो ऑल नंबर्स फ्रॉम 3500 to 3999 आर राउंडेड ऑफ टू दी 4000. और जो भी नंबर्स 3500 से लेकर 3999 से जो भी नंबर्स होंगे वो राउंड ऑफ होंगे नियरेस्ट टू दी 4,000. Thus, the greatest and the smallest numbers which are rounded off to the nearest 1000 as 4,000 are 4,499 and 3,500 respectively. This is the greatest number and this is the smallest number. Now move to the next example, that is example number 4.
397 estimated to the nearest, that is 400. तो स्टूडेंट्स हमने अभी क्वेश्चन में देखा था, दैट इज हमको नियरेस्ट नंबर बताना है, दैट इज 4800 माइनस 400, इट विल बी 4400. नाउ मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज estimated 78,582 minus 36,416 to the nearest 10,000. Now we have to round off the number. 78,582, it will be round off nearest to the 80,000, and 36,416, it will be rounded off the number nearest to the 40,000. 80,000 minus 40,000, it will be 40,000. Clearly, this is not closer to the actual difference. You can see students, these both digits are nearest to the 1000, 10,000, और ये सारे जो भी नंबर्स है ये 5 से ज्यादा है. हमको देखना है ones, tens, 100, 1000, 10,000. तो जो 7 प्लेस वैल्यू है 10,000 की, ये 5 से ज्यादा है. अगेन यू कैन कंपेयर ones, tens, 100, 1000, 10,000. अगेन दैट इज 36,416. तो ये राउंड ऑफ हो गया नियरेस्ट टू दी 40,000. 80,000 minus 40,000, it will be 40,000. Now move to the next. Let us round off each number to nearest 1000. 78,582 estimated to the nearest 1000, that is 79,000. And 36,416 estimated to the nearest 1000, that is the 36,000. अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम इस राउंडेड नंबर का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे. एस्टिमेटेड डिफरेंस 79,000 माइनस 36,000, इट विल बी 43,000. Again, this is still not closer to the actual differences. Again, we will take one more example. Let us round off each number to the nearest 100. अब हमें किस में कन्वर्ट करना है, nearest to the 100. 78,582 estimated to the nearest 100, that is 78,600. ये किस में राउंड ऑफ हो गया स्टूडेंट, 78,582 नियरेस्ट 100. वी हैव टू सी 1, 10, 100. तो आप देख सकते हो जो 5 है वो 5 से ज्यादा है, 582, इट विल बी 78,600. नाउ मूव टू दी नेक्स्ट, दैट इज 36,416. वी हैव टू चेक वंस, टेंस, 100. स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ये क्या हो गया 416, तो 5 से छोटा है, 4 जो है 5 से लेस देन है, तो ये क्या हो गया, किस में राउंड ऑफ हो गया, 36,400 में, बिकॉज 4 लेस देन है किससे, 5 से. तो अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एस्टिमेटेड डिफरेंस, दैट इज 78,600 माइनस 36,400, इट विल बी 42,200. This is the better and more meaningful estimated as it is more closer to the actual differences. Now move to the next, that is estimating the products. Students क्या होता है products, two numbers के बीच में अगर multiplication होता है, that is known as product. Okay, let's start with the example number 9. Estimated the product 32 and 77. Students 32 का rounded number क्या हो जाएगा, it will be 30, and 77 का rounded number it will be 80. That is nearest to the tens. तो अब हम क्या करेंगे, 30 और 80 को मल्टीप्लाई करेंगे, that is 2400. 8 3s are 24 and 2 zeros remaining as it is, that is 2400. Now move to the next example.
That is the example number 10. Estimated 329 into 478 by rounding off each of the number to the nearest 100. Students, again 329. 3 is less than 5. It will be 300. 478. 478. आप देख सकते हो 78 5 से ज्यादा है. It will be rounded off to the 500. Again 300 into 500, it will be that is 1,50,000. You can see 5 3s are 15, 2 zeros as it is and 2 zeros as it is. It will be 1,50,000. Now move to the next example, that is example number 11. Estimate 273 into 263 by rounding off the first number upwards and the second number downwards. हमें क्या करना है, जो फर्स्ट नंबर दैट इज 273, ये अपवर्ड, इट मींस इट विल राउंडेड नियरेस्ट टू दी 100, दैट इज 300, एंड 263 अगेन 5 से लेस देन है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, दैट इज 263, इट मींस 5 से लेस देन है, तो ये राउंड ऑफ किस में हो जाएगा, 200, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, दैट इज 60,000. Now move to the last example, that is estimating the question. Find the estimated question for each of the following by rounding off each number to its greatest place. Again students, you can see question, that is divide. Now we have to estimating the question, that is division. 632 divided by 27. Again we have to do round off. 632 is rounded off to 600 and 27 is rounded off to the 30. 600 divided by 30, it will be 20. Okay students, in our next video we will start from the exercise 1.3. Now second part and the third part is your homework. You have to find out this. This is your homework. Okay students, in our next video we will start from the exercise 1.3. That's all for today. Thank you.